So this spokes, shock absorbers, headlight, this meter, this is the headlamp thing, and it is off right now. It says it is off. And turn it on, and this is the ammeter legacy. You might wonder where is the start switch. So this doesn't have a start key over here. The start button is down here in the box. This is हवा भरने का मशीन. तो मेरे पास एक बाइक है, बहुत पुरानी है और बहुत सालों से पड़ी है, और उसमें हवा नहीं है दोनों पहियों में. एंड अगर मैं उसे ड्रैग करके लेके जाऊं पंचर शॉप तक या जहाँ भी हवा भरना है, तो फिर उसका गेम ओवर हो जाएगा. ट्यूब कट जाएंगे उसके, जो कि मैं नहीं चाहता. वैसे भी ट्यूब में जान नहीं रहेगी इतने. क्या भाई, मास दिया फ्री में, ठीक है. तो वैसे भी मैं नहीं चाहता उसको ड्रैग करना, और यूज़ करना भी उससे ज़्यादा वो नहीं होगा. बस मैं चेक करना चाहता हूँ वो चलता है कि नहीं. तो ये है, इसके रिव्यूज़ अच्छे थे. वॉशर रिव्यूज़ अच्छे थे. बैग अच्छा है, डब्बा अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है. कितना काम करता है पता नहीं, जो भी है. तो उन्होंने उसके साथ ये दिया है. ये मैं अपने कार में लगा के यूज़ कर सकता हूँ. सो क्वालिटी ठीक ही लग रही है. पता नहीं, एमआई ने भी अपना एक पोर्टेबल वो निकाला था. वो रिलीज़ हुआ नहीं है मार्केट में, क्राउड फंडिंग में है. ये इसका हवा भरने का आइटम है, और इसके नोज़ल्स दिए हैं. ये फुटबॉल में भरने के लिए, ये पता नहीं किस में भरने के लिए. ये शायद इसमें आएगा ऐसे, इस तरीके से. ओके. तो या, लेकिन और ये शायद स्क्रू डायरेक्ट इस पे होता होगा. किस पे, कार में या टायर्स में. ओके, लुक्स फाइन, क्वालिटी लुक्स गुड, बट यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा क्या है, हम कितने पानी में है, कितना काम करता है या नहीं करता. केबल भी काफ़ी लंबा दिया है, सो उससे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. मतलब आप कार के पोर्ट में लगाओ इसको, और देन यू रोम अराउंड कार के चारों तरफ, एंड यू कैन फिल चारों पहिए आगे से लेके पीछे तक. So this light turns on when you try to fill the air. So in night you can always see, where to put this nozzle or to. And yeah, so the wire is pretty long. It can reach to 4 of your tires easily. ये अमेज़न पे लिया क्या? What is it called? Inflator? Inflator, tyre inflator.
Raj is rolling pretty easy. He was struggling to roll this bike. So this thing is amazing. It hardly took any 2 minutes or less than that. It filled the tire like to 40 psi, and yeah, it works really good. Like, you need it. Like, if you are going on a road trip and your tire is flat, you need to have that thing. What was that? What is it called, man? The puncture thing. Tubeless tire puncture. I'll show it to you. The thing which I was saying, it is tire repair kit. So it has this kind of this thing, and ये लगाने के लिए, and कुछ. So you need a tire repair kit in case. I'll show you. So you find the puncture, you fix the puncture, and you inflate it. If you have tubeless tires, you can always fill it to some extent and then drive so much, and then इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ. हाँ, तो अगर आपके पास tubeless tires है, you can always fill little air and then drive to a nearby station. आपको चाहिए, you need it. If you are on a road trip, you should have it. It will save you a lot of trouble. Yeah, that's it for this. You guys are amazing. Thank you for watching, and ta-da!